Let's understand the simple meaning of enactment, enforcement, explanation, notwithstanding, proviso. These are the terms that we often come across while reading the BEAR Act. Hi, I'm Mrs. Kritika Singh. It's been over a decade that I have been helping and supporting students to crack Judicial Services Examination. Today we will understand the meaning of these terms so that next time when you read the BEAR Act, it becomes simpler for you to understand the language and understand the provision. So the enactment date is the date when the president gives assent to any law. जिस दिन प्रेसिडेंट उसको असेंट देता है उसको हम एनैक्टमेंट देते हैं एंड अगर वो जो पर्टिकुलर लॉ है इट इज प्रायर टू द इंडिपेंडेंस इन दैट केस द गवर्नर जनरल वुड हैव गिवन द असेंट दैट इज द enactment date. Enforcement date means the date when that law becomes applicable to applicable throughout the country, or in case of a state law it becomes applicable throughout the state. So enforcement date होता है जिस दिन वो law लागू होता है. Then we see notwithstanding. Notwithstanding means even if. आप जब भी notwithstanding को देखें आप वहां पे उसको रिप्लेस कर दीजिए विद द टर्म even if. So notwithstanding means an overriding effect. उस पर्टिकुलर सेक्शन का overriding effect है to the already given law on that particular topic. Then coming on to your provisos. Provisos cannot be read alone. They are not standalone provisions. They are to be read with the main given provision. एंड प्रोवाइजो को हम हमेशा एक स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देते हैं. एंड एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज द एक्सप्लेनेशन गिवन टू द अबव ऑलरेडी गिवन प्रोविजन. सो अगर ऊपर प्रोविजन दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर सेक्शन दिया है और उस सेक्शन में जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझाया गया है उस कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सप्लेन करता है जो एक्सप्लेनेशन है. सो आई होप दीज टर्म्स वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द BEAR Act. Keep mastering the BEAR Act because BEAR Act is the key to the Judicial Services Examination. Thank you. God bless. See you next time. Bye-bye.